tutorials here. थीम की इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी से जिस तरह कुछ तो बेसिक थीम्स होती हैं जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के साथ अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी से फ्री थीम्स वगैरह किस तरह यूज़ कर सकते हैं आप। और एडिशनली अगर जो प्रीमियम थीम्स हैं जो अगर आपकी बाय की हुई हैं, देयर आर फ्यू अवेलेबल ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। थीम की इंस्टॉलेशन को थोड़ा सा देखेंगे, बेसिक सेटिंग वगैरह के बारे में कि वेबसाइट की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किस तरह कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है सेटिंग अप पेजेस एंड मेन्यूज़, सेम पेजेस वगैरह को थोड़ा सा इन डिटेल आज हम देखेंगे। फोर्थ चीज़ जो है पेज टेम्पलेट्स, दिस वुड बी अ लिटिल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा पेज टेम्पलेट्स का। एट द मोमेंट अभी हम कस्टम पेज टेम्पलेट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, लाइक जिस वक्त हम ये बेसिक कंप्लीट कर लेंगे देन वी वुड गो टुवर्ड्स द कस्टम पेज टेम्पलेट्स एज वेल, बिकॉज वर्डप्रेस इटसेल्फ इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये पेज टेम्पलेट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं इफ़ यू आर डेवलपिंग द ओन CMS। अगर वर्डप्रेस को आप कस्टम पोस्ट टाइप वगैरह से अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर रहे हैं तो दिस कम्स रियली हैंडी। और मेन्यू पोजीशंस वगैरह को हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, लेट्स गेट टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पार्ट। हमारे पास पहली चीज़ का है थीम इंस्टॉलेशन। ओके, अभी लास्ट ट्यूटोरियल में तो मैंने अपने वेबसाइट में जो है डिफ़ॉल्ट थीम में से ही 2012 जो है 2013 इंस्टॉल कर ली थी। बट नाउ for free themes from the WordPress repository, WordPress की अपनी वेबसाइट पे there are quite a bundle of free themes and plugins. You may just go through them, but for client-based projects I would recommend using any free theme like ओके, थीम्स हैं, थीम्स आपको मिल जाएंगी, प्लगइन्स अवेलेबल होंगे यहाँ पे। वर्डप्रेस के कुछ प्लगइन्स हैं जो काफ़ी हैंडी रहते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। दिस इज़ यूज टू create contact forms or any kind of form you can just create from this plugin. अच्छा, प्लगइन में हम जो है थीम्स वगैरह के बाद और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम थीम को ही डिस्कस कर लेते हैं, एक्सपीरियंस थीम्स। और दिस टाइम मैं अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना चाहूँगा थीम फ्रॉम वर्डप्रेस रिपॉजिटरी जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव। इट्स अ रिस्पॉन्सिव थीम, फ्री है और इसका नाम रिस्पॉन्सिव ही है। बट वेरी गुड थीम, यस। बेसिकली भी हम इसी थीम को इंस्टॉल करेंगे एंड देन इसको अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, अगर तो मुझे वर्डप्रेस की अपनी रिपॉजिटरी से थीम इंस्टॉल करनी है, मैं अपने एडमिन पैनल के अंदर से डायरेक्टली थीम्स के अंदर जाके एडमिन और सर्च कर सकता हूँ लाइक रिस्पॉन्सिव। और जस्ट इन केस अगर मुझे एग्जैक्ट अपनी थीम का नाम मुझे कौन सी थीम सेलेक्ट करनी है मुझे नहीं पता, तो आई कैन गो फॉर लाइक मैं ऐसे कलर्स सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे किस तरह की थीम चाहिए। लाइक मुझे ब्लैक हो या ग्रे हो, सिल्वर भी चलेगी। कॉलम्स एटलीस्ट 2 कॉलम्स हो या 3 कॉलम्स हो, 1 कॉलम मुझे नहीं चाहिए। लेफ्ट साइड बार हो, राइट साइड बार हो। कोई फीचर्स वगैरह एडिशनल अगर मुझे चाहिए मैं उसको सेलेक्ट करके आई विल जस्ट फाइंड थीम। सो वर्डप्रेस विल
एंड फ्यू थीम्स जो उस कैटेगरी पे जो होते हैं, ठीक है. और I can have a preview. So this theme would be something like this. But as this time I know theme, which theme I'm going to use is responsive, so I will directly search that. Install now. Okay, अगर for example like your host जो hosting जो भी आप use कर रहे हैं that doesn't let you connect to the WordPress repository directly, you can just go to wordpress.org और अपनी जो desired theme है उसको सर्च करने के बाद you can download it and then upload. Once जब आप यहाँ से download करेंगे you will get a zip file in your system और then add new से themes, add new and upload. सेम फाइल आप यहाँ से अपलोड कर देंगे तो इट विल वर्क द सेम वे. ओके, सेव, okay, theme install हो गई है. I have to activate it to apply this theme to my website. Activate running and just let's refresh the website. Yep, here we go. ठीक है, this theme is applied on our website. Menus interface में सेट तो हो गए हैं but we have to configure it. Now कुछ बेसिक सेटिंग्स देख लेते हैं वेबसाइट की. सेटिंग्स जनरल. These settings are independent of the theme. Like website. Okay, this would be like जो कौन से ईमेल एड्रेस अपने उसमें यूज़ करना है जिस पर अपडेट्स हैं. न्यू यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन ओपन रखनी है या क्लोज रखनी है. That totally depends on the type of your project. जो न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं उनका यूज़र रोल क्या होना चाहिए, लाइक should be administrator, author, सॉरी, डेट फॉर्मेट कौन सा फॉलो होना चाहिए हमारी वेबसाइट पे, वीक के स्टार्ट डेज क्या है, whatever. One thing which is important right here is permalinks. By default WordPress जो permalink structure follow करता है that is like page based on the page ID. We can modify it by like if you see जब मेरा default permalink structure select हुआ है, if I go to any website like अगर मैं about me में जा रहा हूँ तो जो मेरे पेज का स्ट्रक्चर होगा that would be based on the page ID. Page ID equals to 8. I can modify this structure by just simply selecting any of the following options. Day and time based हो, like the day and time of when the page was created. Month and name based हो, numeric हो, like archives, archives. And the most popular one is the post name based. You can create any custom structure as well. For general projects, I would recommend using the post name. So this would make the website SEO friendly and it's a better rank. Okay, post name का structure change कर लिया and save changes. And that's it. Now, if I go to any website like email me, you would see the same thing in the page structure, page permalink structure. किसी भी अगर पेज पे नेविगेट करता हूँ I would have the same thing in my URL. Okay, अगर if I want कि मैं इस permalink को modify करना चाहूँ then I would have to go for
pages, all pages. Just for example, like I have email me option, and I want to change this as email us. Email, edit. Now this is a page where I would I will have all the options related to this page. If you see the permalink structure here, I can edit it. Edit. Come on. What's wrong with it? Okay. Edit. Now if you see the basic domain है मेरा, that will remain constant, and I can change the permalink structure. Like if I want to set it to email us, okay, that's it. I need to update it. Now if I go to email me pay, I don't have the page available here, right? I have to refresh it, and now if I go to email me page, my permalink is changed to email us. Okay, so you can use this permalink thing for the search engine friendly URLs, like इसको अगर SEO वगैरह में यूज़ करना चाहें तो you can use that, because this works for SEO. Okay, now next thing is we have a few basic configurations related to the page. इस वक्त मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ. लाइक इफ़ आई वांट के पेज जो है पब्लिश्ड हो, लाइक फ्रंट एंड वेबसाइट पे अवेलेबल हो या अवेलेबल नहीं हो ड्राफ्ट मोड में, दिस वोंट बी अवेलेबल ऑन द फ्रंट एंड वेबसाइट फॉर द यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा. जस्ट एडमिन्स कैन सी दैट एंड मॉडिफाई इट. वंस यू आर डन विद द all relevant things, you can change it to published, and okay, this will become published automatically. And I can set the visibility as well, like the visibility of the page will be public, या password protected, या private. Public would be available for all the users, like visitors के लिए भी available होगा. And if I change it to the private, this will be for the users only. जो WordPress के registered users होंगे, only they can view this page. ये जो बेसिक प्राइवेसी है, ये तो WordPress की डिफ़ॉल्ट है. वी कैन हैव सम एडवांस फीचर्स एज वेल, उसके भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं, एंड यू कैन मॉडिफाई इट एज वेल. वी विल बी डिस्कसिंग द सेम थिंग इन फ्यूचर ट्यूटोरियल्स. एंड इफ़ आई सेट इट टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज, लाइक अगर मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है, एंड आई वांट इसका पासवर्ड है फेसबुक. ओके ओके, update. This is email. And now if I go to email me, it will ask me for the password. If you see, and unless I provide the password here, I can't access the content available on this page. Like इसमें मेरा content है, this page will contain email form, but this content won't be shown to me until unless I provide the password. Facebook. Cool. And I can change the published date as well. This comes handy for the post, like अगर post वगैरह schedule करनी हो to be published on the specific page, and same way we can use it for pages as well. Like अगर मैं page instantly publish नहीं करना चाह रहा हूँ website पे, and I want के ये certain date and certain time पे publish हो, then I can set that date here,
and OK and update. This page will be published on that particular date and time. Okay, I can set the parent here. अपने पेज का अगर कोई भी parent हो, like अगर I have a structure के like मेरा एक पेज है जिसमें मेरी सारी services list हुई हुई हैं, and then I am creating separate page for each service as well. Then I will select the service page as a parent page. Templates. This is the interesting part. वर्डप्रेस की जितनी भी थीम्स आप यूज़ करेंगे, और इफ़ यू आर मेकिंग योर ओन कस्टमाइज थीम, पेज की जो टाइप्स होती हैं बेसिकली दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द पेज टेम्पलेट्स. ओके, लाइक जैसे ईमेल मी का पेज है, वी डोंट हैव ईमेल. ओके फाइन. साइड बार अभी मेरे पास इसमें डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट हुआ है. डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इज़ जिसमें नाउ इफ़ आई इस पेज को थोड़ा सा और से देखें, वी हैव टॉप मेन्यू, लोगो, कंटेंट, राइट साइड बार, and we don't have any footer here. But if I change it to content slash sidebar, no, content slash sidebar half page, which means आधे पेज पे content होगा और आधा जो पेज होगा right side का, that would be half sidebar. Right now we don't have the half sidebar. It is like I guess 30% of the page. If I update it, let's see. Okay, now you see it, the content is limited to the half of the page, and जो sidebar है that has half of the page. Full with page, no sidebar. Let's try this. There won't be any sidebar. So ये पेज टेम्पलेट्स बेसिकली हर थीम के डिफरेंट होते हैं. कुछ बेसिक टेम्पलेट्स थीम के साथ अवेलेबल होंगे, एंड वी कैन मेक आवर कस्टमाइज टेम्पलेट्स एज वेल, जिसमें हम अपना कोई कस्टम जो है कंटेंट अगर शो करना चाहें, या पर्टिकुलर किसी हायरार्की या किसी स्ट्रक्चर में शो करना चाहें, वी कैन यूज़ दैट एज वेल. वी विल बी डिस्कसिंग विद इन फ्यूचर ट्यूटोरियल्स. ठीक है, राइट नाउ आई विल सेट दिस एज कंटेंट. ओके, मैं साइड बार को राइट साइड पे मूव कर लेता हूँ. साइड बार स्लैश देन कंटेंट. वी हैव द कंटेंट ऑन राइट एंड साइड बार ऑन द लेफ्ट. ओके, सो ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे. सेटिंग अप पेजेस एंड मेन्यूज. ओके, मेन्यूज को देख लेते हैं. नाउ मेन्यू एंड मेन्यू पोजीशंस क्या चीज़ है. बेसिकली लाइक वी हैव फर्स्ट मेन्यू हियर ऑन द टॉप. वी डोंट हैव एनी अदर मेन्यू एट द मोमेंट. मेन्यू पोजीशंस आर द सेम एज लाइक वेबसाइट की अपनी थीम की कुछ अपनी डिफ़ॉल्ट मेन्यू पोजीशंस होती हैं जो हर थीम के डिज़ाइनर ने सेट की होती हैं. यू कैन मॉडिफाई देम एज वेल, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन मेन्यू पोजीशंस. लाइक इफ़ आई वांट के राइट टॉप पे, राइट एट दिस प्लेस आई वांट अ मेन्यू. सो आई नो दैट के इस थीम में देयर इज़ एन ऑप्शन टू कीप द मेन्यू देयर. थीम के अपने डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, वी कैन फिगर इट आउट बाय मैनेज लोकेशंस. मेन्यूज़ एंड मैनेज लोकेशंस के अंदर हियर इट शोज़ देयर आर 4 मेन्यू पोजीशंस: टॉप मेन्यू, हेडर मेन्यू, सब हेडर मेन्यू एंड फुटर मेन्यू. नाउ वी विल assign any menu
टू दोज पोजिशंस। एक ही मेन्यू भी क्रिएट हुआ है, हम उसी को सबका असाइन कर देते हैं एंड जस्ट सी के what those exact positions are. Great. Okay, cool. See, we have first menu location right here. Okay, at the top, and we call it top menu. Second menu position we have right here. I guess that is the header menu. This one in the black, and third we have the subheader menu. Okay, fine. And fourth we have a footer menu. एट द मोमेंट हमने जो मेन्यू क्रिएट करे थे, मेन्यू पोजीशंस आर द डिफरेंट थिंग, मेन्यू लोकेशंस जो हैं एंड मेन्यूज आर द डिफरेंट थिंग्स. वी कैन क्रिएट अनलिमिटेड मेन्यूज एंड असाइन देम टू एनी प्लेस वी वांट. लाइक हमने एक तो टॉप मेन्यू क्रिएट किया ही था. नाउ इफ आई वांट के email me should not be in the top menu, or about me and email me ko I want to move here. So I will create a new menu, second menu. I name it second menu. Now second menu में I will assign the pages about me and email me. इस मेन्यू में मैंने जस्ट दो ही पेजेस असाइन किए हैं. सेव मेन्यू. नाउ आई विल गो टू मैनेज लोकेशंस एंड मैं उधर सेकंड मेन्यू को असाइन करूँगा. बिकॉज आई वांट अबाउट मी एंड ईमेल मी हियर इन द टॉप मेन्यू. आई विल असाइन इट टू सेकंड मेन्यू. सेव चेंजेस. If I refresh my page, I would see I have these two pages here, and now अगर मैं यहाँ से remove करना चाहूँ pages को, I will select top menu. इस top menu में से I will email me. That's about fine. Okay, subheader menu इसको भी remove कर देते हैं because we don't need it, because we have already a few pages. Some changes. Okay guys, we have done almost all the basic settings. widgets पे देख लेते हैं थोड़ा. Widgets are basically small places in different areas of the website. Like here we have this one widget, home widget 1, home widget 2, home widget 3. Now if I see in the backend of my admin panel, we have main sidebar. This sidebar will be shown on every page. Right sidebar and left sidebar अलग अलग है. Main sidebar का मतलब है कि if I set anything into the main sidebar, this would be shown on all the pages, चाहे उनको right sidebar assign हुआ हो या left assign हुआ हो. The same way if I assign something to just the right sidebar, let's place the pointer here. Let's see, मैंने किसी पेज को अगर राइट साइड पर दिया हुआ है तो कैलेंडर. Why is that? So then
they should have appeared here. Okay, maybe because we haven't assigned the right sidebar in any page, let's put it into the main sidebar. I don't know this post. Set comments, executed. Another interesting thing is like if I want to place custom menu. What is this custom menu? Basically अगर मुझे sidebar में navigation show करनी like the same pages or some different menu, I can just drag and drop the custom menu in any of the sidebar. Title, navigation, and मैं इसको कोई भी menu assign कर सकता हूँ. Like if I assign the top menu, so मैंने top menu में जितने pages assign किए होंगे, they would appear here. Right? We can customize the style. To build a style as we can customize the design. We will see it in the future tutorials. I think इस tutorial के लिए और कोई चीज़ इस वक्त नहीं बची. New positions. Okay, we are done with this. All these things. If you have any queries, you can contact me on Facebook. Or you may ask me directly in the group with tips and tricks. Okay guys, everything else is remaining for now. If you have any queries, you can ask me directly in the group. I will reply as soon as I am. Thank you for watching.